रोहित शर्मा का विकेट. पीपी यू किक्ड ऑफ. सो बताओ भाई, रोहित शर्मा का हुआ क्या? वो भूला मोमेंट था उसका वो. आई नो, चेहरे पे दिख रहा था कि यार यार अरे यार. Shreyas Iyer, I think he's a little lacking clarity right now. I think डर डर Yeah. के खेल रहा था. He was not his true self. I fear we might get bundled before 400 also. हेलो दोस्तों. वेलकम टू द नाइट वॉचमैन पॉडकास्ट. टेस्ट मैच चालू हो चुका है. सेकंड टेस्ट मैच वाइजैक में डे 1 खत्म हो चुका है. तो मेरे दोस्त पीपी और हमने सोचा यार डे 1 के बारे में बात किया जाए, और हम कोशिश करेंगे इस टेस्ट मैच को डे बाय डे रिव्यू करने की. तो पीपी भाई, डे 1 हो गया. इंडिया ने टॉस जीता. बहुत बड़ा एडवांटेज था टॉस जीतना इन कंडीशंस में. बैटिंग फर्स्ट, नो ब्रेनर. यार पीपी, बट हमने मैच चालू होने से पहले हमने टीम प्रेडिक्ट करने की कोशिश की थी. Correct. और वी वर ऑलमोस्ट देयर इफ यू थिंक अबाउट इट. बट एक सरप्राइजिंग डिसीजन जो रोहित शर्मा ने लिया, विच वाज वॉशिंगटन सुंदर को नहीं पिक किया, वर्सेस ही पिक्ड 2 पेसर्स और मुकेश को पिक किया. पीपी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? I know I picked 2 fast bowlers in my squad actually. Yeah. Siraj was there. But for me, it was not so much of a surprise of the combination of fast bowlers versus spinners as much as the individual. Because Siraj played only one test match before they replaced him, right? So they've sent him Correct. back and given him rest. But you must be surprised on both ends, not only the first one, but also the combination, right? So it was surprising, no doubt. But the only saving grace is Anderson on this pitch was bowling well. So I do not know if it is because Anderson ka 180 test matches ka experience, yeah, fast bowler ke liye kuch hai. There's nothing much there. He was trying to extract as much as possible, but it was definitely surprising. But hopefully the pitch favors. I wouldn't say favor, but hopefully it is not totally against the fast bowler, and there is something left there. So what do you think of the pitch though? यार इंटरेस्टिंग ये था. पिच वाज एवरीवन बेसिकली अज्यूम्ड दैट दिस वुड बी अ रैंक टर्नर, राइट? डे 1 से टर्न होगा. और जब मैं मैच चालू हुआ, मैंने जस्ट पिच दिखाया तो ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आया. लुक लाइक अ डिसेंट बैटिंग विकेट, टिपिकल इंडियन विकेट. यार विल स्टार्ट ऑफ अच्छा बैटिंग करेंगे, इट विल स्टार्ट टर्निंग डे 3, 4, 5 ऐसा वो वैसा लग रहा था. बट काफी रूमर्स था कि नहीं, डे 1 से टर्न होगा. ऐसा कुछ था नहीं. एंड वी सॉ डे 1 ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. इट साउंड्स लाइक हर्षा भोगले ने बोला कि इट दिस टेस्ट मैच कुड गो इनटू डे 4 एंड डे 5 आल्सो. सो यार वो तो चलो, पिच वाज इन द लाइमलाइट फॉर all the reasons that we will not talk about now, but we'll get into the test match. PP, we'll get into the flow of the test match, right? 3 session थे. What do you think about session wise, right? कैसे गया इंडिया के लिए, इंग्लैंड के लिए? Start with the first session. First session, I think we were 130 odd for 2 wickets, right? So do you think like first session कैसा था तेरे हिसाब से? Yeah, I think first session was 60-40 towards India, I would say. I know we lost 2 wickets, but we scored, like you said, little over 100 runs. Rohit's dismissal was a little funny, in my opinion, because Rohit, matlab, he is king of leg side, और उसने glance किया और it's almost उसके reaction में दिखा कि यार अरे यार I forgot कि वो बंदा था. We'll come back to wickets. We'll come back to wickets. But do you think 131 whatever for 2 wickets? Do you think India's session? Yeah, 130 for 2 was, like I said, 60-40 towards India. Session 1 belonged a little bit towards India. And session 2 also was India's, because we lost only 1 wicket in that session, right? So going into the P, I think we were well ahead of England. 225 for 2, 225 for 3, sorry. So 3, we lost first 2 sessions, India ke sessions. Perfect, yeah. Right? Third session 3 is where I think even session 3 was going towards India,
except for the last 10 overs, where we had lost only one wicket by then, Yeah. where there was only 10 overs remaining, right? We had lost who? Was it Patidar, right? Patidar was the Ah, only one who lost. Patidar. So four down at around 300 was India. But then last 10 minutes, sorry, 10 overs is when I think right now the match is an even Steven. I would still say maybe a little, England is a little ahead because अपना Oh, batting में ना कोई सुंदर नहीं है, right? So I don't know where we will end up. So that's where I think section 3 belongs to England. so overall, day-wise, do you think 50-50 या England का थोड़ा advantage ज़्यादा है? I would say 55-45 towards England because of lack Really? of batting because we need 450 500 और मेरे को नहीं लगता कि इतना confidence नहीं है unless Jaiswal gets a big 200 plus, right? It's मुश्किल लग रहा है मेरे को. Interesting. So 55-45, the day belongs to England because of just the last 10 overs. दिन Because का. of last 10 overs and lack of depth in Indian batting because we don't have Jadeja, neither did we replace him with Washington Sundar, like you said. Okay. Okay. चलो ठीक है, ये तो दिन था. विल टॉक अबाउट विकेट्स यार. विकेट 6 विकेट गए पीपी. इफ अगर समराइज करना है ना विकेट्स को, एक्सेप्ट एक विकेट which again it's a bit of setup तो था ही, बट पूरा 6 का 6 विकेट आई थिंक हमने दिया है. उन्होंने लिया नहीं है, हमने विकेट दिए. तो विल जस्ट टॉक अबाउट, आई नो यू ब्रीफली टॉक्ड अबाउट रोहित शर्मा का विकेट. पीपी यू किक्ड ऑफ, सो बताओ भाई रोहित शर्मा का हुआ क्या? वो भूला मोमेंट था उसका वो. I know. चेहरे पे दिख रहा था कि यार यार अरे यार ऑफ हैंड पे भी नहीं खेला तो प्रॉपर ग्लैंस था वो एंड आई थिंक I don't know, it was a lapse of concentration that he forgot that player was there, but it was good captaincy from Stokes Yeah, in backing the new spinner and bowling outside नहीं डाल रहा था, stump पे डाल रहा था, so he was forced to play that ball, right? So correct, I think correct. Rohit Sharma's definitely lapse in concentration or judgment, something along those lines. But what was good to see was Gill. Gill looked really confident. He gave Yeah, me, I could recall Pujara who used to come down the wicket and just smother the spin and just take single, right? कि गिल ने बहुत बात किया because आजकल कोई नहीं कर रहा है. If you come down the track, people try and hit it for 4 or 6. But people who come down the track and take singles is very rare. Which Gill was doing it, correct, which is good. correct. So that's why it is a little disappointing that Gill couldn't make it big. But also kudos to the old fox, Jimmy Anderson, for getting the nick out of him. बट सेटअप देखा तू यू सॉ द सेटअप राइट. वो बेसिकली वो 2-3 ओवर का एक स्पेल था. वो बेसिकली स्टंप टू स्टंप डाल रहा था, एक बॉल बाहर जा रहा था, गिल एज्ड अ फ्यू, 4 गया. विकेट से पहले स्टोक्स एंडरसन बात कर रहे थे. बेसिकली दे मूव द स्क्वायर लेग, अंदर था, 30 यार्ड नहीं होता बट अंदर था, उसको डीप स्क्वायर लेग भेजा और विद द इंटेंशन कि भाई तेरे को बाउंसर डालेगा. और वो ओवर में आई थिंक 3 या 4 बॉल हुए थे, सब स्टंप पे थे. और जैसे ही ये उस लोग ने मूव किया, डीप में डाला स्क्वायर लेग, उसने आगे ही पिच किया, आगे इन द सेंस गुड लेंथ भी पिच किया बट ऑन द 4th स्टंप. सो गिल बेसिकली वाज एक्सपेक्टिंग अ बाउंसर. 4th स्टंप पे फेंडेड, कैच, फोक्स. सो परफेक्ट सेटअप था, बट कहीं ना कहीं गिल शुड हैव एक्सपेक्टेड दैट. वो लूज शॉट भी था थोड़ा बहुत, बट यार यू आर राइट, बहुत अच्छा खेल रहा था. उस परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, पिच अच्छा था उसके लिए. एंड एक्चुअली तू ये बात बोल रहा है ना, आई वाज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट इट. इंडिया में स्पिन को कैसा खेलेगा? पुजारा, यस, तेंदुलकर आगे आके वो मारते नहीं थे, सिंगल निकालते थे, मिल्क आगे आके. बट गिल वो कर रहा था, ही इनफैक्ट एंडरसन को आगे आ रहा था वो, इफ यू रिमेम्बर, राइट. सो बहुत डिसअपॉइंटिंग था यार, उसका विकेट बहुत डिसअपॉइंटिंग था. चल दूसरा विकेट पीपी श्रेयस अय्यर ने किया क्या? व्हाट वाज दैट इनिंग? Shreyas Iyer, I think he's a little lacking clarity right now. I think डर डर या के खेल रहा था. He was not his true self. It's easy to criticize right now, speaking see it या from a distance and seeing it from a distance. But या from where we were seeing it, he looked not in good nick and totally little confused in terms of what his strategy needs to be. And
I would say even Rohit Sharma didn't help his thinking because I don't know what the message was from the team management towards the players in terms of, hey, we need to bat only once in this pitch and we have to get big 500 plus. And that's why people were not as aggressive. I do not know. But whatever it is, Shreyas Iyer looked confused. वो इन बिटवीन था ओडीआई और टेस्ट मैच के बीच में, I would राइट say, yeah. Yeah. राइट ले ओके. ओडीआई में टी20 की तरह खेलता है. लेकिन इधर इधर तो बीच में था वो. या बट अगेन वो कैच बहुत जबरदस्त था, राइट. बेन फोक्स का लाइक Correct. इनसाइड Bottom एज, edge. bottom edge actually, yeah, bottom edge. As a keeper you are, squat रहता है and you're moving up, ball नीचे जा रहा है, so बहुत अच्छा कैच था. बेन फोक्स एक्चुअली बहुत बढ़िया कीपर है. आई Yeah. मीन गिल का भी कैच बहुत अच्छा था, ये Yeah. भी, एंड ही इज कीपिंग वेल ऑन इंडियन Yeah. टर्निंग ट्रैक, सो बहुत बढ़िया विकेट कीपर है. बट debutant Rajat Patida, I'm sure he's very disappointed with this dismissal, right? But I mean, तो वो डिसमिसल देखेगा तो बैट पे बहुत ऊपर लगा, और Correct. बिकॉज ऑफ द रेव्स बैट पे ऊपर लगा, वो बैक स्पिन होके जस्ट कुडंट Correct. स्टॉप इट. बट थोड़ा लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस भी बोल सकते हैं, पर अनफॉर्चुनेट. Unfortunate, but whatever he was there, he looked very confident. He Yep, looked like a player who knows to play spin, very comfortable. yep. He played couple of shots, 2 4, a very confident player. But yeah, I would say वो unfortunate उसका in वो how शॉट देखा तू, ओपन फेस ओपन करके ऑफ साइड four में मारा covers के by four मारा. फोर, अच्छा लग रहा था. he was looking good. I'm sure he's very disappointed. Yeah. लास्ट 2 विकेट अक्षर एंड श्रीकर भरत, आई थिंक वो मिरर विकेट थे. It was a bad ball. Both of them were bad balls. It was like, Yeah. short of good length भी नहीं, short ball Correct. था. Correct. दोनों स्क्वायर कट करने में ये, आई थिंक ये 2 विकेट, इफ इंडिया आगे पता नहीं क्या होगा, बट दिस could be a moment that could come to Correct. haunt. Definitely. I think they both will be cursing themselves. Srikhar Bharat, definitely, he's a local boy who has played in that ground many times. Should have made it big, but he did not. Hey, but we spoke about 6 wickets that fell. But a Yeah, big boy who made it today, Jaiswal. मतलब तेरे को कैसा yeah. लगा उसका innings? Is it यार जायसवाल, आई मीन फ्रॉम वेयर ही इज कम फ्रॉम, राइट, जो उसका पूरा स्टोरी है एंड व्हाट ही इज डन, बहुत इनक्रेडिबल स्टोरी है उसका. आई मीन आई थिंक वी फाउंड अ वेरी गुड ओपनर इन ऑल फॉर्मेट्स, राइट. इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट स्टिकिंग विद हिम. उसको चांसेस दो एंड देगा मैनेजमेंट, उसको चांसेस देगा जिस हिसाब से चल रहा है. बट ये इनिंग, यू नो एक आध चांसेस था, बट वाज वेरी, ये था मतलब बहुत टफ चांसेस था, बट वाज अ फ्लॉलेस इनिंग यार. अग्रेशन, और अगेन वो भी एक्चुअली ये कर रहा था, भले वो इतना आगे नहीं आ रहा था, बट ही वाज कमिंग फॉरवर्ड, फुल टॉसेस में डाल के गैप्स में निकाल रहा था. सो यार अगर वो नहीं खेलता तो पता नहीं क्या होता. बट ब्रिलियंट इनिंग्स. आई थिंक एंड में उसको कुछ थोड़ा इंजरी का स्केयर था. आई होप ही इज Hmm. ओके, but he's going to be key, on day 2. But brilliant inning to bat the whole day, PP. Exactly. हालत खराब हो जाता है, I'm sure. Yeah, yeah, no, brilliant. I think he played a good mix of traditional Test cricket and aggression. In fact, first ball of Joe Root, he slashed for four, and मैंने बोला यार ये तो फिर से baseball mode गया क्या फिर? Then I think I don't know if Rohit Sharma calmed him down or what, Yeah, but I think it was good 50-60 strike rate. I don't know what is the eventual strike rate of his, but that yeah. is a traditional thing. I think fantastic innings. यार बीबी स्ट्राइक रेट का बात कर रहा है. आई वॉज एक्चुअली लुकिंग एट बैसबॉल का बहुत बात चल रहा है. आई वॉज लुकिंग एट इसका अपना जायसवाल का स्ट्राइक रेट ओवरऑल, नॉट जस्ट दिस इनिंग. हिज ओवरऑल स्ट्राइक रेट इन टेस्ट मैचेस, शॉर्ट टेस्ट करियर है, 5 टेस्ट मैचेस, इज अबाउट 60, एंड फर्स्ट क्लास का भी देखेगा कंबाइन करके, हिज स्ट्राइक रेट इज 65, राइट. बैसबॉल का बहुत बात चल रहा है. तो यार अपना, आई वॉज थिंकिंग अबाउट द ओरिजिनल, the the OG opener Virender Sehwag, and I pulled out Hero. some stats. Yeah, apna, who changed the face of opening Yeah, the baton basically. yeah. The strike rate देख रहा था मैं, average is 50, 49 point something है, 82 का strike rate से.
पीपी 100 और टेस्ट मैचेस 82 का स्ट्राइक रेट से 8000 Unheard ऑड of. रन्स, Unheard of. राइट? This is not आई मीन possible at all. इतना मतलब इतना aggressive. I don't know. I mean, we have to check who else has that high strike rate in test matches. I don't know. Viv Richards might be there, high 70s or even 80s. I don't know, but very few people have that kind of strike rate at that यप average. यप यप, just brought back a lot of memories. राइट? ठीक है बीबी, ये तो चलो ठीक है. What looking ahead day 2, what do we need to do? Day two, I think first things first is making sure we somehow score at least 450 runs. At नहीं, least. 450 is too less पीपी. We have to score. Last टेस्ट मैच में भी 450 अपन ने स्कोर किया था. We have to at least go past like 500 at minimum पीपी. That's at least what I think. I would want at least to be 600, but I know I I'm know. trying to be realistic with what we have in terms of batting Yep. lineup. That's why I'm saying 450 to minimum. I fear we might get bundled before 400 also. Yeah. So that's Yep. my fear. But realistically, I think, like you said, par is somewhere around 500. And England batting number 4, they are going to go aggressive, right? So Yeah. they might score big in their first innings. So we have to first make sure that I'm sure Rahul Dravid will sit down with Jaiswal and say, "Yaar, 170 kiya hai. We are very proud of you, but go there as if you're going fresh. Take the confidence, but don't assume कि यार अभी मैं out हुआ तो भी no problem, right? Because 170 मारा है. No, no. Team needs Yeah. you to score another 100 more from here, right? So that's the first thing. Then we'll discuss England batting and all later, but I think this is Yep. the big one for us to score at least Yep. 450 to 500. Yep. I agree. 450. I mean 450 तो बोल रहा है, मेरे हिसाब से they have to reach 500, but I get your point. Realistically वो पहुंच पाएगा कि do we get bundled between below 400? We'll see. Yeah, that will be worst So case. that's the worst case. So यार पीपी, we have what अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे मेरे यहाँ पे तो डैलस में 7 बजे हैं शाम के, तेरे यहाँ पे 8 बजे है. We have 3 hours more to go before the test match starts. So day 2 is going to be intriguing. वो plan क्या है? मैच देखेगा पूरा कि you're going to watch the highlights in the morning? नहीं, तो मैं जनरली फर्स्ट सेशन देखता हूँ रात तक, हाँ. 1 बजे तक देखता हूँ. उसके बाद देन मेरी बच्ची जब उठती है 2 बजे फिर से एक बार देख लेता हूँ फोन में. वैसे देख देख के फिर सुन के मैं सो जाता हूँ. देन सुबह जाके देखता हूँ कि क्या हुआ. सही है, सही है. तू उठने चल, वाला है? आज वीकेंड है, अभी वीकेंड है तो जुम्मे की रात है. अबे कल भी मैं 1:30 तक तो देख ही रहा था, तो आई वॉच्ड हाँ. सेकंड सेशन का 1 घंटा देखा मैंने. हम्म. सो आज तो, कल तो सैटरडे, तो आई एम श्योर आई विल वॉच जितना हो सकता है. जब तक आंख खुली रहेगी आई विल डेफिनेटली वॉच. बट विल कम बैक पीपी टुमारो and hopefully India is in a good position, and we'll see. But again, the test match is heading in a very interesting direction. India के पास advantage था after winning the toss. They have not capitalized on it fully, I but would we agree. will see what happens. Yeah, All right. fantastic. That is the review PP. बाकी again just हमारे दोस्तों के लिए, अगर आप ये देख रहे हैं, आपको ये पसंद आ रहा है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए. फिर मिलेंगे कल पीपी. Until then, जय राम जी. bye bye. जय राम जी की. Bye.